used to be that second favorite spot in the whole house. और सवेरे सवेरे इस चेयर पे उनके लिए चाय और न्यूज़पेपर डिलीवर करने की ड्यूटी लगा रखी थी मेरी. He would just sit here and look out at his garden. निहारते रहते बस. By now you would have guessed कि उनकी favorite spot क्या होगी. Yep, the garden. This garden was Papa's life. Every evening after work, वो अपने gardening tools लेकर बैठ जाते थे, surrounded by his पेड़ पौधा. He used to love spending time with them. And I loved the flowers. But I still didn't know how he did it. उनकी उंगलियों में जैसे जादू सा था. Papa used to always say, अगर आम आज खाने हैं तो 5 साल पहले प्लानिंग करनी चाहिए. So typical of him. हर चीज में प्लानिंग. But I guess all architects are like that. I remember the time when we forced him to take us to Goa. He finally agreed and we were all excited and all. But उन्होंने ना अलग से अपनी प्लानिंग कर रखी थी. A religious trip as a payback. फिर हम सबको टूर पे ले गए. To all these coastal temples in Goa. Yeah. Who does that? Everything had a place, everything had an order. But yeah, that was him. It's been years since. Still miss that about him. It happened on an ordinary Tuesday. उन्होंने माँ की हेल्प की मेरी टिफिन पैक करने में, handed it to me, and we left. He didn't complain about any chest pain, no nothing. Not like he complained about anything in life. I still think वो सुबह थोड़ी सी different होती from any other, so that I could remember it better. Just hold on to it for longer. उनके गुजर जाने के बाद माँ और मैं we were literally clueless. There was this overwhelming feeling कि अब क्या होगा. मैंने माँ से कहा about my plans of quitting college and looking for a full-time job. I really didn't want to, but कोई option नजर ही नहीं आ रहा था. She just said, Papa has taken care of us. और मुझे उनकी life insurance policy थमा दी. I really didn't know how to react. पापा ने अपनी पूरी life हमारा ख्याल रखा. और जब वो हमारे बीच नहीं रहे, he made sure that we had all the support. He gave me the confidence to pursue my dreams. In fact, पिछले साल ही I opened my new dispensary. I think somewhere along the way, मैंने उनके पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताना सीख लिया. शायद a bit of his magic has rubbed off on my fingers too. रोशनी से पहले निकले, तकदीर से हम मिलने, इन राहों के गाँव में बैठा रहा मैं पिछली सीट पर. छुपा मैं आपकी छाँव में, मुचड़ी कमीज को पकड़ कर, खास एक डोर से जुड़े बैठा रहा मैं पिछली सीट पर. चलता रहा मैं पिछली सीट पर. बादलों में झांकते चेहरे, गिरता
चला मैं पिछली सीट पर। पीछे बैठे हीरोज की तरफ से आगे बैठे हीरोज को हैप्पी फादर्स डे।